Hello everyone, welcome to LevelUp IAS. So in today's session, we will start with the next topic of CSAT weekly, that is the topic of clocks. Again, before starting, as we always do, we will analyze how many questions are there of this topic in your PYQs. Also, after that, we will see level of difficulty of the question. Now, before all of this, I want to tell you that the questions of for the questions of clocks, again like calendars also, clocks में you should know the basics. You should know what angle hour hand, minute hand covers in 1 minute, 1 hour, and so on. ठीक है? So without knowing the basics, you won't be able to do the questions of this topic. So again, some topics in reasoning are there which you can do without even knowing the basics also. For example, topics like sequences. Okay, even if you don't know that what kind of sequence is there, sometimes you can still identify, right, कि ये ABCD वाला sequence था, तो आप उसमें identify कर सकते हो using options, put ABCD, जिसमें भी pattern बन रहा है, you will select that option. But in topic of clocks and calendars, things don't work that way. So you need to do the basics and you need to know the concepts first, then you will easily be able to do the question. So we will start with the first question of our topic, which is of CSAT 2024. Oh, so we'll start with discussing first kitne questions aaye, right? CSAT 2024 mein there were 2 questions from this topic. Then in 22, 2 questions. Then in 21, there was 1 question. Then in 2019, 2017, then you have a question in 2015 and 14 also. So see, we can see that reasoning mein a lot of topics are there that have been asked either alternately, and they can ask the topics because बहुत frequently पूछा गया है, but at the same time not every year. ठीक है? But again, with if you'll ask me whether a question of this topic can be asked or not, it can be asked. ठीक है? So although every year नहीं पूछा गया, but even then ये टॉपिक के काफी क्वेश्चंस आए हैं. सो these are also one of those topics कि if you get a question of this, you shouldn't be surprised कि how am I, how is there a question of clocks in reasoning, 2 questions क्यों हैं. ठीक है? So let's start with the first question to check the level of difficulty now. How many times hour hand and minute hand of a clock coincide in a clock between 10 a.m. and 2 p.m. in the same day? ठीक है, this is the question. Question का मतलब देखते हैं. So you have a clock like this. ठीक है, this is a clock. This is 12, 3, 6 and 9. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइम्स मिनट हैंड एंड आवर हैंड कोइंसाइड. ठीक है, सो दिस इज 1, दिस इज 2. ओके, वी नो दैट एट 12 ऐसे होता है, द बिगर वन, लॉन्गर वन इज द मिनट हैंड, शॉर्टर वन आवर हैंड. ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल बिटवीन 10 and 2. ये देखो 10 and 2 in this time period, how many times hour hand and minute hand will coincide? That means when will they be one above the other? Okay, this is the question. Now you see one thing. Let's say abhi time is 12 a.m. or 12 p.m. whatever. ठीक है, अब क्या होगा? After some time, ये this is firstly I am drawing this hour hand. ठीक है, after some time this hour hand will be like this. Then like this 1 hour के बाद our hand will be यहाँ पर at 1. ठीक है, our hand after 1 hour, our hand will roam around like this 12 to 1. ठीक है, ऐसे एंगल कवर करेंगे. At the same time, what will happen to minute hand? Minute hand will go like this and complete around, and यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 p.m. ठीक है, now see, if time is 10 a.m. तो क्या डिफरेंस आएगा? Let's say the time is 10 a.m. ठीक है,
दिस इज द आवर हैंड, ठीक है, दिस इज द मिनट हैंड, ऐसे ही होता है। अब 10 AM के बाद at 11, when 11 AM will be there, our hand will shift like this, ऐसे करके आएगा। Meanwhile, what will happen to minute hand? Minute hand will take a round like this and like this and will come back here. ऐसे ही होता है, तभी हमारी क्लॉक में ये 11 है, ये 12 है, ठीक है। ये टाइम आएगा जब मिनट हैंड दोबारा पूरा राउंड लेके इट विल बी एट 12। सो दैट मीन्स यहां से ये देखो, when this hour hand is traveling from 10 to 11 and when minute hand is also going like this, यहाँ पर at some point they will coincide once, ठीक है। Similarly, that means every hour में when minute hand is going, hour hand and minute hand coincide once in every hour, they coincide, ठीक है। This much is clear. Now, if they are coinciding once in every hour, that means 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, ठीक है। 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2. There are 4 hours, so they should coincide 4 times. But the trick in this question is कि जब 11 से 12 और 12 से 1 होते हैं, तो इसमें clock coincides only once at once, क्यों? Because वो when they coincide it is common, they coincide at 12, ठीक है। तो अब ये 12 जो है ना, it is common for both of these time periods. So actually in every hour the minute hand and hour hand of the clock coincide, but 11 to 12, 12 to 1, they coincide only once. So one for this, one for both of these, 10 से 12, 12 से 1 के लिए 1 and 1 for this. In total they coincide 3 times. 3 times in this time period. Okay, so my answer for the first question is 3 times. Option A, 3 times they will coincide, ठीक है। So actually 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 4 hours हैं। Every hour में they should coincide once, but यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होगा? Because यहाँ के लिए only 1. It is common for 11 to 12, 12 to 1, right? Now, next question is, what is the angle between minute hand and hour hand? Okay, so in the next question I will tell you how to find out angle between minute hand and hour hand when any time is given to you, when the clock shows 4:25 hours, ठीक है। So clock is showing 4:25. सबसे पहले you need to always have a picture of clock in your mind. This is 12, 6, 3, 9, ठीक है, 4 and 5. Clock is showing 4:25. That means I know that at 4 clock is showing time like this, ठीक है। At 4:25 clock is showing, now this hour hand, ठीक है, at 4 clock is showing time like this. This much we know. At 4:25 this is 4 and this is 5, ठीक है। At 4:25 अब देखो ये आर हैंड है, आर हैंड भी थोड़ा सा मूव होगा because half an hour is completed, so our hand will also move a little bit this angle, ठीक है। At the same time minute hand will be at 25, that means here, ठीक है। So now I know that our hand is somewhere between 4 and 5 and minute hand is like this, ठीक है। So you have to find this angle. Question is this, ठीक है। So firstly, can I say that from this
ठीक है, 12 से लेकर 5 तक हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? इन 12 पार्ट्स इन अ क्लॉक, ये पूरा, ठीक है, दैट मीन्स 12 आवर्स में कितना 360 डिग्री कवर होता है बाय एन आवर हैंड। ये एक आवर हैंड, सॉरी मिनट हैंड है, 12 पार्ट्स पे इट रोम्स अराउंड लाइक दिस, ठीक है, इन 12 पार्ट्स, 12 parts, it roams around like this, ठीक है। 12 parts is what? That means 1 hour में, in 1 hour from here to here, ठीक है, it covers 360 degrees, ठीक है। We are talking about minute hand, ठीक है। 1 hour में 360 डिग्री, that means 60 minutes में 360 डिग्री। That also means 1 minute में कितने डिग्री कवर हो रहे हैं? 6 डिग्री। 360 1 मिनट में 360 divided by 60, ठीक है, 6 degrees are covered. So now if you have covered how many minutes till now? From 12 to 5, 25 minutes. In 25 minutes you are at 6 multiply 25 degree, ठीक है। Is this much clear? In 25 minutes you are at 150 degree angle, ये angle, that means this angle is 150 degree। इतना हमने find out कर लिया। Now we have to find out this how much angle is the hour hand traveling। minute hand का तो देख लिया, ठीक है। अब hour hand के बाद की बात करते हैं। See again as I told you 360 degree complete angle, ठीक है, divided into 12 parts, that means one part has how many degrees? 360 divided by 12, one part has 30 degrees, ठीक है। We are talking about our hand now, ठीक है। I know in 1 hour our hand कितना ट्रेवल करता है? ओनली वन पार्ट। एक घंटे में ये 12 है, ये 1 है, our hand goes from 12 to 1, ऐसे ही तो ट्रेवल करता है। In 1 hour our hand travels one part, that means 30 degrees, so that means 60 minutes में our hand is traveling 30 by 60, half degree, ठीक है। So how many minutes have we covered extra? 25 minutes में our hand will travel 25 by 2, ठीक है, 12.5 degrees, ठीक है। So from that means when we are going from this 4 to this 4, ठीक है, 4 में our hand is traveling like this angle, this is what? 12.5 degrees. So one thing you can do is, one more thing you can do, ये पूरा कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। this angle is 30 degree, our hand is traveling 12.5, so you can simply यहाँ से भी you can find out that this is what? 17.5 degree, ठीक है। otherwise we have already seen that minute hand जो है it is covering 150 degree, our hand यहाँ तक कितने डिग्री कवर होगा? till 3 it is 90 degree plus 30 120, so that means in total 120 plus 12.5 132.5, so our hand is covering 132.5, minute hand is covering 150 degree, ठीक है। subtract difference कितना होगा? subtract from this, ठीक है, 17.5, this also you can do, okay। so यहाँ पर actually the thing was here that देखो technically you should do like this only, find out minute hand, find out hour hand, and then find out the difference, because in this question it was already given to you at 425, ठीक है। so आपको ये complete angle पता था, ये complete angle is going to be 25, तो आपने ये find out कर लिया। but what if
it is not exact 25, it is somewhere like this. ठीक है? So for that you have to either find out the angle or you have to, but the best approach is subtract कर, right? So these were the two questions of CSAT 2024. For this one, the answer is option B. Option C, 17.5 degrees. Right? Now, let's move on to the next question, that is of CSAT 2022. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है देखो, a man started from home at 2:30 hours, मतलब 14:30 hours, so 2:30 p.m. drove to village, arriving there when the village clock indicated 3:15 hours. ठीक है, after staying for 25 minutes, he drove back by a different route of length 1.25 times the first route at a rate twice as fast. ठीक है, so distance is 1.25 times and time is speed is double. Reaching home at 16:00 hours, that means 4 p.m. as compared to the clock at home. Village clock is what? देखो, आप 2:30 पर स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग एट 2:30 p.m. ठीक है, आप let's leave whatever you did in between, let's leave 2:30 p.m. you are leaving from your place, at 4 p.m. you are reaching back. ठीक है, so whatever you did, you traveled this distance, stayed there, whatever you did, all of that was covered in 1 hour 30 minutes time period. ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपने सब कुछ ये कर लिया, ट्रैवल कर लिया, एवरीथिंग यू डिड. ठीक है, नाउ आई नो दैट इन 1 hour 30 minutes, in my 1 hour 30 minutes time period, what I did, I stayed for 25 minutes, stayed in the village for 25 minutes. That means 1 hour 5 minutes के लिए I traveled. ठीक है, 1 hour 30 minutes का पूरा टाइम पीरियड था, आप गए विलेज में 25 मिनट स्टे किया एंड देन यू केम बैक, दैट मीन्स यू आर ट्रैवलिंग फॉर 1 hour 5 minutes. ठीक है, यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया दैट योर ट्रैवल टाइम, टोटल ट्रैवल टाइम इज 1 hour 5 minutes. नाउ सी वन मोर थिंग, लेट योर इनिशियल डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस था उसको x मान ले, जो भी स्पीड थी दैट इज y. ठीक है, we know speed is equal to distance upon time, that means time is equal to what? Distance upon speed. ठीक है, so यहाँ से I can say how much time I took x by y, this is the time I took. ठीक है, अब while returning distance was 1.25x, this was the distance, speed was y, speed was 2y, double the speed. ठीक है, तो फ्रॉम हियर टाइम क्या था, x वाली क्वांटिटी 1.25x डिवाइडेड बाय 2y, दैट मीन्स 125 डिवाइडेड बाय 200y, which means 5/8 of y. This is your time. So time while going and time while coming, ठीक है, y by x, x by y. ठीक है, x by y plus 5/8 x by y. This is your total time. Let me assume total ये t है. ठीक है, t plus 5/8 of t. All of this is equal to what? 1 hour 5 minutes. ठीक है, that means 15/8 of t. Sorry, 13/8 of t. This is equal to 1 hour 5 minutes, 65 minutes. So time is equal to what? 40 minutes. This t is what? Initial time, पहले वाला. Initially when distance is this is this. ठीक है, so that means you took 40 minutes while going there. ठीक है, and 5/8 of 40, right? 5/8 of x by y, मतलब 5/8 of t. So that means you took what? 25 minutes while coming back. ठीक है,
सो अब देखो आपने क्या क्या किया. फर्स्टली यू स्टार्टेड एट 2:30. ठीक है. 40 minutes you took while going. Then you stayed there for 25 minutes. Then you took 25 minutes to come back. ठीक है. That means 40 plus 50. You took 90 minutes. 90 minutes is what? 1 hour 30 minutes. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन क्या था? हाउ मच स्लो और फास्ट क्लॉक देखनी है. देखो 2:30 पे आप स्टार्ट हुए. ठीक है. 40 मिनट्स आपने टाइम लगाया. दैट मीन्स यू आर रीचिंग एट व्हाट? अगर आप 2:30 से 2 hour 30 minutes प्लस 40 मिनट, दैट मीन्स आप 3 hour 10 minutes पर यू आर रीचिंग. बट वहां पर विलेज क्लॉक शोज व्हाट? Actual clock should show 3 hour 10 minutes. Village clock is showing 3 hour 15 minutes. Actual 3 hour 10 minutes. और village की clock 3 hour 15 minutes. That means village clock is what? 5 minutes faster. ठीक है. ये question था. Now next question of CSAT 2022. Consider the following statements. Between 3:16 p.m. and 3:17 p.m. both hour hand and minute hand coincide. Okay. Between 4:58 p.m. 4:59 p.m. both minute hand and second hand coincide. Okay. ठीक है. So सबसे पहले तो statement 2 को, if you will look at statement 2, 4:58 and 4:59, that means you are at like this 4 and 5. ठीक है. मिनट हैंड है 4:58 से 4:59 ऐसे जा रहा है. ठीक है. दिस इज 12. so minute hand is going like this. seconds वाला hand, it will take a complete turn. so obviously at one point it will coincide, क्योंकि वो उसको overcome करेगा ही to complete the whole minute, right? so this statement is correct even without doing anything. okay, now let's discuss the first statement. so we know that second statement तो होगा ही, they will coincide. first statement discuss करते हैं. so between 3:16 and 3:17 p.m. both hour hand and minute hand coincide. ठीक है. so basically अभी in the 2024 also we discussed that question कि in every hour, ठीक है, they will coincide. ये तो हमें पता है कि in every hour. so this means between 3 and 4 also they will coincide once. they will coincide once. इतना पता है. so let's find out at what time they will coincide. ठीक है. अब ऐसे क्वेश्चंस हमेशा थोड़ा सा टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है. सो आई नो दैट दिस आवर हैंड, इट इज एट 3. मिनट हैंड, इट इज एट 12 हियर. ठीक है. ऐसे है. उसके बाद एट 4, दिस इज 6, 5 एंड 4 ऐसे. ठीक है. बिटवीन 3 to 4 दे विल कोइंसाइड वंस. तो लेट्स से आवर हैंड जो है वो यहाँ आ गया. ठीक है. मिनट हैंड ने ये डिस्टेंस कवर करना है. सो टेक्निकली इफ यू सी आवर हैंड, दिस मिनट हैंड हैज टू कवर ये 15 मिनट्स. 15 minutes plus something, right? so it is similar to the question in time speed distance when we do ki ye there's a thief is running at this speed. उसके बाद जो पुलिस है is also running after the thief and पुलिस had a thief had a head start of 10 minutes. तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? relative speed. ठीक है. अब सेम चीज है, ये 15 मिनट्स कवर करने हैं and 15 minutes, what is the relative speed? I know that in 1 minute, ठीक है, 1 hour में, in 1 hour this complete 1 hour में ये it will take the complete turn. in 1 hour that is it takes 60 minutes. ठीक है. 1 hour पूरा 60 minutes complete हो जाएंगे. but at the same time जो मिनट जो आवर हैंड है, मिनट हैंड
1 आवर में 60 मिनट्स, मतलब पूरा राउंड 60 मिनट्स में कंप्लीट कर रही है, बट आवर हैंड है 5 मिनट्स, तो वो भी कवर कर रहा है इन 1 आवर। 5 मिनट्स दैट इज ये वाला एंगल, देखो, ठीक है। अगर ये यहां से यहां तक पूरा 60 मिनट्स में कवर कर रहा है, 60 मिनट्स, ठीक है, बट द अदर वन इज ऑल्सो टेकिंग दिस टाइम and is covering 5 minutes of this relative, 60 minutes, ठीक है। अगर आप पूरा राउंड लेने को 60 मिनट्स बोल रहे हो, तो 5 मिनट्स तो जो आर हैंड है ये भी राउंड ले रहा है ना, 5 मिनट्स का राउंड एज कंपेयर टू मिनट हैंड। दैट मीन्स इफ यू सी डिफरेंस कितना आया, 55 मिनट्स। सो सो टेक्निकली फॉर एवरी 60 मिनट्स 55 मिनट्स का डिफरेंस है, ठीक है। फॉर एवरी 60 मिनट्स 55 मिनट्स का डिफरेंस है। नाउ दैट मीन्स इफ यू हैव टू कवर 15 मिनट्स, ठीक है, वैसे तो इफ यू हैव टू कवर 60 मिनट्स, तो इफ यू हैव टू कवर 15 मिनट्स, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? इट शुड बी 60 बट इट इज 55 बिकॉज 5 मिनट्स वो भी कवर कर रहा है। सो हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कवर दीज 15 मिनट्स का डिस्टेंस मान के चलो, 15 मल्टीप्लाई 60 बाय 55, ठीक है, बिकॉज नाउ योर स्पीड इज दिस मच ना, 60 होनी चाहिए थी बट इट इज 55, सो योर स्पीड इज एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस योर आंसर विल बी व्हाट, 180 by 11. 180 by 11 means 1 and 16 point something minutes, ठीक है। सो आफ्टर 3, जब ऐसे वॉच में क्लॉक में 3 टाइम है, उसके बाद 16 point something minutes this hour hand will take, this minute hand will take to complete the distance जो कि our hand is already completing, ठीक है। so that means 16 point something minutes, so at 3 hour 16 minutes something seconds the clock will coincide again, that means yes, between 316 and 317 they will coincide. So option both 1 and 2 both are correct, both 1 and 2 will be your answer. Now see again you will see repetition of the similar question, but वहां पर जैसे आपको मिनट्स कवर करने थे, तो हमने क्या किया, हमने टाइम का रिलेटिव स्पीड लिया कि जितनी देर में 60 मिनट्स कवर हो रहे हैं, उतनी देर में जो आर हैंड है इट इज कवरिंग ओनली द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 5 मिनट्स, राइट। सो यहाँ पर क्या है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू द आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो यू हैव टू सी 180 डिग्री का एंगल कब होगा, एंड टाइम इज एट अराउंड 7, at 7 hours between 7 and 7:05, then at 7:05 between 7:05 and 10. So after 7 you have to tell 180 degree का एंगल कब होगा। now that means अब हमें स्पीड कैसे कंपेयर करनी है इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। सो आई नो दैट जो आर हैंड है, आर हैंड it is only covering this much 30 degree, our hand is covering 30 degree in 60 minutes, that means our hand will cover what, half degree in 1 minute, ठीक है। this much we have concluded, our hand will cover half degree in 1 minute. Now let's talk about minute hand.
ठीक है। मिनट हैंड इज कवरिंग 360 डिग्री। मिनट हैंड जो है पूरा राउंड ले लेते हैं 1 आवर में, 360 डिग्री इन 60 मिनट्स। ठीक है, दैट मीन्स इन 1 मिनट मिनट हैंड इज कवरिंग व्हाट 6 डिग्रीज। सो आई नो दैट 1 मिनट में इन दोनों की रिलेटिव स्पीड में क्या डिफरेंस है, 6 माइनस हाफ, दैट इज 5.5 degrees. So 11/2 is the relative speed. जैसे वहां पर relative speed क्या थी, 60/55. ठीक है, आर हैंड बाय मिनट हैंड जो कवर हो रहा है, मिनट हैंड बाय आर हैंड। ठीक है, सो यहाँ पर relative speed क्या है, इट इज 11/2. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टाइम कितना कवर करना है। ठीक है, या फिर सॉरी डिस्टेंस कितना कवर करना है, सो दैट आई नो कि टाइम कितना होगा, राइट। At 7, this is 6, this is 9, this is 7, and this is 8. So I know at 7 p.m. this my clock is showing this time, right? So you know that you want an angle of 180 degree. Okay, first of all, what is this angle? This is 180, this is 120, 180 plus 30. So this completely, this will be what, 210 degree. Okay, but we want 180 डिग्री। ठीक है, सो हम क्या चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव एन एंगल लाइक दिस। यहाँ पर जब तक ये भी थोड़ा आगे आएगा लाइक दिस, यू शुड हैव एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। दैट मीन्स हाउ मच डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड, डिस्टेंस टू बी कवर्ड is what, 210 is there. I want that 180 degree should be there. That means 30 degree आप cover कर लो, 30 degree distance should be covered. What is the speed? Speed भी तो आप distance के respect में देखोगे ना. What is the relative speed? I know relative speed is 11/2 degrees. ठीक है, so 30 divided by 11/2, I will get what, 60/11. That means 5/11 minutes. So after 7 के बाद 7 plus 5, 5/11 minutes. 7 hours, 5 minutes and 5/11 minutes के बाद they will have an angle of 180 degree. So your answer will be between 7:05 and 7:10, right? Okay, so this was for CSAT 2021. Now you have 2019. A wall clock moves 10 minutes fast in every 24 hours. 10 minutes fast in every 24 hours. ठीक है, तो 24 hours में 10 minutes का वो gain कर रहा है. You have clock was set right to show the correct time at 8 AM on Monday. So Monday 8 AM पर आपने टाइम सेट कर दिया. ठीक है, अब करेक्ट टाइम है, Monday 8 AM is the correct time. When the clock shows time 6 PM on Wednesday. Wednesday को 6 PM clock में है. This is not the actual time. Keep this in mind. 6 PM is the time that the clock is showing. What is the correct time? So question is, what is the correct time, right? So I know that clock has gained some time. So obviously correct time is somewhere here. ठीक है. Also, अच्छा, I can also conclude that 10 in every 24 hours. ठीक है, I am gaining 10 minutes. So let's say Monday 8 AM to Tuesday 8 AM. I have gained 10 minutes. ठीक है, then Tuesday 8 AM से Wednesday 8 AM. I have again gained 10 minutes. ठीक है, so 20 minutes तो already I have gained till Wednesday 8 AM. So सबसे पहले if you have 6 PM, you subtract 20 minutes, you will get what? 5:40. ठीक है, टाइम 5:40 से कुछ कम होगा. अच्छा, also you see that from 8 AM, ठीक है, 8 PM भी नहीं हुए, तो 8 AM से 8 PM, 8 PM भी नहीं हुए, तो 8 AM से 8 PM, 8 PM 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 से 8
8 PM में there are 12 hours. ठीक है, 8 AM to 8 PM there are 12 hours. 12 hours भी complete नहीं हुए. That means you could not 10 minutes है ना, 24 hours में 10 minutes है, 12 hours में you could not have gained 5 minutes also, because 12 hours ही complete नहीं हुए. So that means 540 से अगर 5 माइनस करो 535, टाइम शुड बी समवेयर इन बिटवीन. ठीक है, बिकॉज आप देखो, हम ट्यूसडे दिस वेंसडे 8 AM तक वी हैव सब्ट्रैक्टेड टाइम. ठीक है, वेंसडे 8 AM तक वी हैव सब्ट्रैक्टेड, वी नो दैट 20 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए थे बिकॉज 2 times 24 hours have been repeated, Monday to Tuesday, Tuesday to Wednesday. Wednesday 8 AM हो गया and now 24 hours 2 बार हो गए. That means you have gained, clock has gained 20 minutes. ठीक है, अब देखो 24 hours will be completed, then clock will gain 10 minutes, right? So you know that जब तक 12 hours ही नहीं हुए, 24 hours में clock is gaining 10 minutes. 12 hours में clock will gain what? 5 minutes. ठीक है, बिकॉज जो गेन हो रहा है दैट इज ऑल्सो नॉट, यू नो, ऐसे नहीं है कि एंड में ही एकदम से क्लॉक इज मूविंग. गेन इज ऑल्सो डिवाइडेड इक्वली. सो 12 आवर्स में क्लॉक विल गेन लेट्स से 5 मिनट्स. ठीक है, नाउ 12 आवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए, लेस देन 12 आवर्स, दैट मीन्स क्लॉक विल गेन व्हाट? लेस देन 5 मिनट्स अभी तक. इसका मतलब जो आपके पास टाइम है दैट इज +10 एंड +5 भी कंप्लीट नहीं हुआ, +25 नहीं हुआ. सो दैट मीन्स आपका जो टाइम है इट विल बी व्हाट? फ्रॉम 6, इट इज शोइंग 6, बट गो बैक 10 मिनट्स 550, गो बैक 10 मोर मिनट्स 540. ठीक है, 540 में से यू कैन नॉट गो बैक 5 मिनट्स क्योंकि अभी तक 12 आवर्स भी नहीं हुए. सो यू कैन नॉट गो बैक कंप्लीट 5 मिनट्स. 535 आप नहीं जा सकते. सो दैट मीन्स जो एक्चुअल टाइम होगा इट विल बी समवेयर बिटवीन 540 to 535. ठीक है, फॉर दिस यू ओनली हैव ऑप्शन ए विच इज योर आंसर ऑल्सो. This is the way of doing this question in the examination so that you do not waste a lot of your time. But now I'll tell you the complete approach. ठीक है, so you know that in 1 hour there are 60 minutes. ठीक है, in 24 hours there are 24 multiply 60. So this will be what? 1440 minutes. 24 hours में 1440 minutes कवर होने चाहिए. ठीक है, बट जो आपकी वॉच है, योर लेट्स से जो क्वेश्चन क्लॉक है, ठीक है, इट इज सेइंग 24 आवर्स में 1440 minutes +10, 1450 minutes it is covering. This is the question that is given to you. ठीक है, so your relative speed is what? 1440 divided by 1450. ठीक है, relative speed is relation between these two. ठीक है, होना ये चाहिए और एक्चुअली ये होना चाहिए, बट ये स्पीड से आप चल रहे हो. ठीक है, 10 मिनट्स आप गेन कर रहे हो. नाउ हाउ मेनी आवर्स हैज इट बीन पास्ड फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे? मंडे 8 AM, ट्यूसडे 8 AM 24, देन वेंसडे 8 AM 24, देन वेंसडे, अगर वेंसडे कंप्लीट हो जाता, वेंसडे लेट्स से 8 PM भी हो जाता, तो यू वुड हैव 24 + 24 + this is AM, right? 6 PM, right? 24 + 24, 48 + 12. So you would have had 60 hours. But now it is not till Wednesday 8 PM. It is till Wednesday 6 PM only. That means 60 hours complete नहीं हुए, only 58 hours. ठीक है, 58 hours have been completed. Now technically in 58 hours, how many minutes should be there? 58 hours में you should have 58 multiply 60 minutes. That means 3480 minutes.
अब ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. इफ यू फॉलो द मेथड यू विल हैव टू डू द कंप्लीट कैलकुलेशन ऑल्सो. ठीक है. सो इन 58 hours for every in every hour there is 60 minutes. So in 58 hours you have 3480 minutes. अब देखो 3480 minutes है, but your speed is what? This is your speed. That means 3480 multiply by 1440 divided by 1450. You will finally get 3456. These many hours are actually completed. Now you divide this by, convert it into days and hours and everything. So again you will get that only 536. ठीक है. So but I would not advise this approach. I would say कि logical reasoning है. So why not put reasoning? Why do you want to do the complete calculation and everything? ठीक है. Use your reasoning skills. Now ठीक है. Again you have this question of 2017. A watch loses 2 minutes in every 24 hours, while another watch gains 2 minutes in every 24 hours. At a particular instant, two watches show an identical time. Which of the following statement is correct if 24-hour clock is followed? Okay, so एक watch है loses 2 minutes and another watch is gaining 2 minutes. So difference कितना है? 4 minutes difference. 4 minutes का gap आ गया in 24 hours. आपको ये बताना है कि ये watches, two watches show identical time on completion of 30 days, identical time again on completion on 90 days, identical time on completion of 120 days. ठीक है. So you know that means आपको क्या चाहिए? You want the watches to be in sync, that is you want the watches to show identical time. So आपको gap कितना चाहिए? You need a gap of 24 hours between the watches. ठीक है. Now you know that in 24 hours, one day में 4 minutes का gap है. ठीक है. That means you 1 minute का gap कितने days में होगा? 1/4 day में. ठीक है. 1 day का gap is in 4 minutes. You want that you should have a gap of, okay, 1 minute का gap will be in 1/4 day. So 1 minute का gap in 1/4 day. But we want a gap of what? We want 1 minute gap is in 1/4 day. We want a gap of 24 hours. ठीक है. तभी होगा ना, वो इतनी पीछे हो जाएगी वॉच और वो इतनी आगे हो जाएगी कि you will have a gap of 24 hours. 24 hours means 24 multiply 60. 1440 minutes का गैप चाहिए. So 1 minute का गैप 1/4 day में है. 1440 minutes का गैप कब होगा? 1440 divided by 4. You will get 360 days from here. So that means that none of the answers is correct. The two watches will show identical time after 360 days. So option D will be your answer. Option D will be your answer. Okay. Now let's move on to the next question, that is of 2015. ठीक है. Again this is also a question जिसमें आपको पूरे मेथड के बजाय थोड़ा सा रीजनिंग का यूज करना चाहिए. Between 6 PM and 7 PM, minute hand of the clock will be ahead of hour hand by 3 minutes at what time? अब आप ये देखो, 6 PM is this. This is 6 PM. You want minute hand. Minute hand means this one. You want minute hand to be ahead. Ahead मतलब वो already 30 minutes, 6:30 के बाद, ahead of this, 6:30 के बाद. ठीक है. And you want that it should be ahead, but इतना ज्यादा नहीं. You only want a gap of 3 minutes. ठीक है. अब आप खुद बताओ
you know that at 6:30, ठीक है, ये 6 है, this is 7, 8, 9. At 6:30, you know that this will be your hour hand. ठीक है, minute hand will be like this at 6:30. अब आपको चाहिए कि ये फॉरवर्ड आए बट ओनली 3 मिनट्स फॉरवर्ड. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है इसके लिए? In how many, what is this distance? 5 minutes. If you want just 3 minutes forward, that means that this minute hand is covering some distance जो कि यहीं तक रहेगा. ठीक है, so यहाँ पर क्या आंसर होगा? 6:36 PM. ये 5 मिनट्स का डिस्टेंस प्लस समथिंग एल्स. ठीक है, 48 तो ऑब्वियसली नहीं होगा बिकॉज तब तक तो वो यहाँ पर होगी. ठीक है, गॉट इट? सो option C will be your answer. Now let's do the next question, that is of CSAT 2014. So in this question you have, assume that hour and minute hand of a clock move without jerking. Clock shows a time between 8 o'clock and 9 o'clock. Two hands of the clock are one above the other. After how many minutes? Nearest integer बताना है. Will the two hands be again lying one above the other? ठीक है, so again यहाँ पे हमें क्या चेक करनी है? Relative speed. Already they were lying one above the other. ठीक है, they were coinciding. ठीक है, now we have to check after how much minutes will they coincide again. ठीक है, so again ये पूरा कितने में करेगा? 60 by, ये पूरा 60 करना चाहिए, but by the time it will cover 60 minutes, it will also cover 5 minutes. This will also cover 5. That means relatively 60 by 55 in R according to R. ठीक है, so that means 1 hour 5 minutes something. If you divide this, you will have, according to this, you want nearest integer, right? So you will have 65 point something. Option C will be your answer. ठीक है, so see, in questions of clock, what you have to do is you have to use a little bit of reasoning also, because if you will try to solve each and every question, it will be a very lengthy one. For example, we saw that in this year, in this question, yeah, this one, if you go by the complete method, it will take a lot of time and then it is not worth doing this question, right? So instead of that, you apply a little bit of reasoning. You should know कि इतने time में इतना gain होगा, इतना loss होगा, and apply those concepts. And then not all questions are done without the method, but yeah, some of them which are lengthy, you can also apply the reasoning part, because you know that options are also not very close, so you can find out the answer using options also. So this is the only tip in this section, that clocks may use your reasoning skills also. Even if you don't know the method, use a little bit of that. Even if you know the method, see, try to do this using your own a little bit of common sense, because पूरा method से करोगे तो question will be too lengthy for you. Okay, thank you so much for watching the video.